Hello, Assalamu alaikum. Today we will see lecture number 28 from the subject numerical methods. We will do in previous lecture we derived the Newton's backward difference interpolation formula. Today we will do the example on this. This is the first example. As you can see, we have given the data points with the function values. So we have to estimate the value at 4.25. Solution. So x i's, y i's. 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 and 4.5. Corresponding function values 9.75, 12.45, 15.70, 19.52, 23.5. In this case, we don't have to construct the Newton's forward difference table, but we have to construct the Newton's backward difference table. So construct Newton's backward difference table. Okay, so delta yi will be equal to this minus this, y2 minus y1. So over here, and I have to write it over here. Okay, delta y2 हम जहाँ पे लिखते हैं जो भी उस टाइम पे फंक्शन का वैल्यू होगा वही सिंबलाइज इट विद दिस. सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने डेल्टा y1 नहीं लिखा, मैंने डेल्टा y2 लिखा, विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1. सो दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू 2.70. Similarly over here, delta y3 will be equal to y3 minus y2. This will be 3.25. Delta y4 will be equal to 3.82 and delta y5 will be equal to 4.23. ऑलरेडी मैंने सिखाया है आप लोगों को कैसे हम ये टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके, अगर आपको याद नहीं है उसे आप ज़रूर देखें. डेल्टा y3 will be equal to this minus this. So this will be 0.55. Delta square y3 will be, y4 will be equal to 0.57 and delta square y5 will be equal to 0.41. Then delta cube yi. So delta cube y4 will be equal to this minus this. So this will be 0.02. So delta cube y5 will be equal to minus 0.16. As we have only 5 data points, so we have to go up to the fourth order. So delta 4 y5 will be equal to minus 0.18. Okay. Now the question is estimate the value at 4.25, and 4.25 lies between these two values, right? Now in backward difference operator, we have to estimate the value in the lower half of the table. So instead of estimating the value at this point, we have to estimate the value at the last point, 4.25. So we have to generate the formula up to the fourth order Newton's backward difference operator, Newton's forward interpolation formula. जो फोर्थ ऑर्डर तक हमें डिराइव करनी है, जनरेट करनी है. देन वी सिंपली हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड वी हैव टू सॉल्व दिस. कैसे करते हैं हम उसको डिराइव? अभी हमने डिराइवेशन देखी कैसे करते हैं. सो लेट अस डू दैट. y ऑफ 4.25 विल बी इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, y ऑफ n प्लस डेल्टा वाई एन टाइम्स u प्लस डेल्टा स्क्वायर yn divided by 2 factorial u into u plus 1 plus delta cube yn divided by 3 factorial, it will be 6 u into u plus 1 and u plus 2, right? Is there anything missing? No. Plus delta 4 yn divided by 4 factorial, and 4 factorial will be 4 into 3 into 2 into 1,
6 and 4, that will be 24. So 24 u into u plus 1, u plus 2 and u plus 3. Up to the fourth order we have derived the formula. Now we simply have to substitute the values. Let us do that. ओके यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि हमें डिराइव करने के टाइम पे हमेशा याद रखना है. वी हैव टू डिराइव द फंक्शन वैल्यू एट द लास्ट पॉइंट, दैट मीन्स एट द फिफ्थ डेटा पॉइंट. सो जो ये n है, इन दिस केस n इज़ इक्वल टू 5, n इज़ इक्वल टू 5. तो हमारी जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगी, y ऑफ 4.25 विल बी इक्वल टू y5 प्लस डेल्टा y5 ऑफ u प्लस delta square y5 divided by 2 u into u plus 1 plus delta cube yn divided by 5 u plus 1 u plus 2 plus delta 4 y5 divided by 24 u into u plus 1 u plus 2 and u plus 3. Okay. Now what we have to do is we have to simply substitute the values, which is very easy. लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए, substitution से पहले ये u किसके बराबर है. What is the value of this u? We know that u हमारा जो होता है वो होता है x minus x of n divided by h in case of Newton's backward difference interpolation formula, which is equal to हमारे जो data points है वो equal sized है. h हमारा जो है वो है 0.5, difference है उनकी 0.5. x is given. What is x? 4.25. x of n is the last point and that is also given, that is 4.5 divided by 0.5, which is equal to minus 0.5. Okay. Now we have all the values. Substitute all the values in this equation so that we can solve this. So इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे. y of 4.25 will be equal to y5. What is the value of y5? y5 का जो वैल्यू है that is 23.75 23.75 plus delta y5. delta y5 है 4.23 into u. What is the value of u? 0.5 जो हमने अभी निकाला, प्लस डेल्टा स्क्वायर y5. डेल्टा स्क्वायर y5 है हमारे पास जो ये वाला वैल्यू जो हमने टेबल में वैल्यूज निकाले. डेल्टा स्क्वायर y5 इज 0.41. सो 0.41 डिवाइडेड बाई 2 u 0.5 into 0.5 plus 1 plus डेल्टा क्यूब y5 बराबर है हमारा माइनस 0.16 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 0.5 प्लस 1 एंड 0.5 प्लस 2 प्लस what is delta 4y5, that is minus 0.18. so plus minus 0.18 divided by 24 into 0.5. okay, 0.5 plus 1, 0.5 plus 2, 0.5 plus 3. okay, so y of 4.25 is equal to, so after you will calculate all this, you are going to get is like 21.6001, which is approximately equal to 21.601. So this is the solution and this is how we calculate or solve all the questions regarding Newton's backward difference interpolation formula. I will give you an assignment. Over here I would say, why should I give you an okay, I will give you a separate assignment for this so that you can solve all the questions at home. Thank you. Have a nice day.